Hello students, next we will discuss about the types of ELISA. So there are three types of ELISA. First one is the indirect ELISA, second one is the sandwich ELISA, and third one is the competitive ELISA. So first, indirect ELISA. Listen students, there is one microtiter plate. Clear? In microtiter plate, 96 well plates are present. Around 96 well plates are present. So this one is the antigen coated well. Clear? In indirect ELISA वेल के अंदर जो सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. फिर इन एंटीजन के साथ जो हमारी प्राइमरी एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है, वो आके बाइंड करती हैं. ठीक है. आफ्टर दैट प्राइमरी एंटीबॉडीज़ के साथ सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ आके बाइंड करती हैं एंड सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ कैरी एंजाइम्स. क्लियर? आफ्टर दैट substrate will be added. Clear? If the color of the solution is changed, means it detect the antibody presence. Clear? See here. Wait. Antibody can be detected or quantitatively determined with an indirect ELISA. So with the help of indirect ELISA, we can detect the antibodies. Means we have to identify that what type of antibody is present and how many antibodies are present in the solution. Clear? Means both qualitative and quantitative approach of antibodies is determined by the indirect ELISA. Clear students? Serum or some other sample containing primary antibody is added to an antigen coated microtiter plate or well and allowed to react with the antigen attached to the well. See here. Sorry. In case of indirect ELISA, जो हमारे पास वेल प्रेजेंट होती है उसके बॉटम में क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन प्रेजेंट होते हैं. इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एंटीजन कोटेड वेल. ठीक है. इस एंटीजन कोटेड वेल के साथ जो हमारी प्राइमरी एंटीबॉडीज हैं, ठीक है, मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर जो एंटीजन प्रेजेंट है इनके साथ हमारी जो प्राइमरी एंटीबॉडीज़ है वो आके बाइंड कर जाती हैं. क्लियर? अभी तक सिर्फ हमने इतना पढ़ा. नेक्स्ट, आफ्टर एनी फ्री एंटीबॉडी इज वॉश्ड अवे, द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी बाउंडेड or bound to the antigen is detected by adding an enzyme conjugated secondary anti-isotype antibody which bind to the primary antibody. See here. After that, secondary antibody that carry enzyme is bind with the primary antibody. Clear? Next, any free secondary antibody then is washed away and a substrate for the enzyme is added. See here, we have to add a substrate. The amount of colored reaction product that form is measured by specialized spectrophotometric plate readers, which can measure the absorbance of all of the wells of a 96 well plates in seconds. So, in case of indirect ELISA, we have to detect the
both qualitative as well as quantitative approach of antibodies. Clear? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एंटीजन कोटेड वेल प्रेजेंट होती है, उसमें हम प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड करते हैं. आफ्टर दैट वी हैव टू ऐड द सेकेंडरी एंटीबॉडी दैट कैरी द एंजाइम, एंड आफ्टर दैट वी हैव ऐड सबस्ट्रेट. विद द हेल्प ऑफ सबस्ट्रेट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज चेंज. It detect the presence of, if color of the solution is changed, means it detect the presence of antibodies. Clear? Indirect ELISA detect the presence of serum antibodies against human immunodeficiency virus, the causative agents of AIDS. Clear? Indirect ELISA किसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है? सीरम एंटीबॉडीज अगेंस्ट HIV. That is the, we all know that HIV is the causative agent of AIDS. Clear? In this assay, recombinant envelope and core protein of HIV are adsorbed as solid phase antigen to microtiter wells. Next, individuals infected with HIV will produce serum antibodies to epitopes on these viral proteins. Clear? Generally, serum antibodies to HIV can be detected by indirect ELISA within 6 weeks of infection. ठीक है? So हम with the help of indirect ELISA we have to detect the HIV. Clear, students? Next is the sandwich ELISA. What is sandwich ELISA? See here. Sorry. In indirect ELISA जो हमारी वेल होती है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? बॉटम में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है. ठीक है? और फिर हम क्या करते हैं? एंटीजन ऐड करते हैं. मीन्स एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है. आफ्टर दैट वी हैव टू ऐड secondary antibody that carries enzyme, and after that we have to add substrate that will change the color of the solution. Means sandwich ELISA helps to detect the, sorry, help to detect the antigen. Clear? And indirect ELISA helps to detect the antibodies. So see here, antigen can be detected or measured by a sandwich ELISA. In this technique, the antibody rather than the antigen is immobilized on a microtiter well, जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया. ठीक है? A sample containing antigen is added and allowed to react with the immobilized antibody. After the well is washed, a secondary enzyme linked antibody specific for a different epitope on the antigen is added and allowed to react with the bound antigen. ये सारी प्रोसेस वही बोली है जो अभी हमने डायग्राम में डिस्कस की. After any free second antibody is removed by washing, then we have to add substrate and the colored reaction product is measured. ठीक है? विद द हेल्प ऑफ सबस्ट्रेट जो सोल्यूशन होता है अगर उसका कलर चेंज हो जाता है इन केस ऑफ सैंडविच एलाइजा, देन इट हेल्प्स टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन.
Clear? Third and last one is the competitive ELISA. See here, in case of competitive ELISA, जो हमारी माइक्रोटाइटर प्लेट होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसके बॉटम में कुछ एंटीजन भी प्रेजेंट होते हैं, दीज रेड वंस आर द एंटीजन, या फिर इसके बॉटम में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स भी प्रेजेंट होता है, या फिर सिर्फ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। क्लियर है? इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव एलाइजा, आफ्टर दैट see here, incubated antibody with antigen to be measured, ठीक है, add antigen antibody mixture to the antigen coated well, ठीक है, इस वेल में फ्री एंटीजन भी प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स भी प्रेजेंट होता है, या सिर्फ एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव टू ऐड सेकेंडरी एंटीबॉडी that carry enzyme, and at last we have to add the substrate that will change the color of the solution, ठीक है। So see here, another variation for measuring amounts of antigen is competitive ELISA. In this technique, antibody is first incubated in solution with a sample containing antigen. Clear? The antigen antibody mixture is then added to an एंटीजन कोटेड माइक्रोटाइटर वेल, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, एंटीबॉडीज, यहाँ पे जो बचे है हमारी माइक्रोटाइटर प्लेट है, ठीक है, इसके बॉटम पे एंटीजन प्रेजेंट है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंटीबॉडी को डालेंगे, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी एंटीजन के साथ क्या कर जाएगी, बाइंड कर जाएगी, और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगी, ठीक है। सेकेंड टाइम पे हम जो ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है, इसे हम कहाँ डाल देंगे, सॉल्यूशन में डाल देंगे, ठीक है। आफ्टर दैट, इतना क्लियर है? सॉरी, the more antigen present in the sample, the less free antibody will be available to bind to the antigen coated well. Clear? Addition to an enzyme conjugated secondary antibody specific for the isotype of the primary antibody can be used to determine the amount of primary antibody bound to the well as an indirect ELISA. After that, see here, sorry, we have to add secondary antibody that carry enzyme, and this secondary antibody is bind with the primary antibody. Clear? In the competitive assay, however, higher the concentration of antigen in the original sample, the lower will be the absorbance. Clear? So this is all about the competitive ELISA. Next we will discuss about the ELISpot assay. A modification of the ELISA is called ELISpot assay. Allows the quantitative determination of the number of cells in a population that are producing antibodies specific for a given antigen, or an antigen for specific antibody. Clear? So this is all about the ELISA. Thank you.